Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the course of Psychological Testing and Measurement 1. I'm your course instructor Nazia Yaqoob. Our today's lecture is about reliability measurement. The main topics that we will learn in today's lecture include Kuder-Richardson reliability, coefficient alpha, measuring Kuder-Richardson reliability through SPSS and Excel. Kuder-Richardson reliability in psychometrics, the Kuder-Richardson formula 20, KR20, first published in 1937, is a measure of internal consistency reliability for measures with dichotomous choices. इसे हम उन आइटम्स के लिए यूज करते हैं मेनली जिसके अंदर हम डाइकोटमस क्वेश्चंस रखते हैं, जैसे यस और नो वाले क्वेश्चंस हो गए, जिनके अंदर 2 वे आंसर्स हो सकते हैं ओनली। ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी रिलायबिलिटी के असेसमेंट के लिए KR20 जो है फॉर्मूला यूज किया जाता है। मेनली इट वाज डेवलप्ड बाय Kuder and Richardson. The name of this formula stems from the fact that it is 20th formula discussed in the Kuder and Richardson's seminal paper on the test reliability. It is a special case of convex alpha computed for dichotomous scores. इसे 20 इसलिए कहा जाता है कि 20th टाइम्स जो है वो एक डिफरेंट फार्मूला जो है वो डिस्कस किया गया फॉर दिस पर्पस। इस वजह से इसे हम KR20 भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है वो KR21 भी आ चुका है इन द रिसेंट एरा। There is a way of estimating the average of all the possible split half coefficients on the basis of the statistical characteristics of the test item. यहाँ पे हम बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू इन चीज़ों को हम असेस कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, सच एज स्प्लिट हाफ कोएफिशिएंट जो मेथड है उसके थ्रू भी इसको हम कर सकते हैं। This approach, developed by Kuder and Richardson 1937, involves computing the means and variances of the items that constitute the test. इसमें हम क्या करते हैं कि इससे हम आइटम्स का जो मीन होता है और जो वेरिएंस होता है उसके थ्रू इस कंप्यूटेशन करते हैं। हम कोई भी स्केल जो है क्लाइंट के ऊपर एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके बाद हम मीन स्कोर फाइंड आउट करते हैं। मीन और वेरिएंस से हमें अंदाज़ा होता है कि ये पर्सन जो है वो उस के अंदर जो है वो स्पेसिफिक ट्रेड या करेक्टरिस्टिक जो हम मेजर कर रहे हैं वो किस लेवल की है। द मीन ऑफ अ डाइकोटमस आइटम, वन दैट इज स्कोर्ड एज ईदर राइट और रॉन्ग, जिस तरह से मैंने येस और नो का बोला, या राइट और रॉन्ग के आइटम्स हैं, ये डाइकोटमस आइटम्स हैं, इज द प्रोपोर्शन सिंबलाइज्ड एज पी। डाइकोटमस आइटम्स के जो स्केल्स होते हैं उनके मीन को हम पी से इंडिकेट करते हैं of individuals who answer the item correctly. P हम लिखते हैं जिनके अंदर जिन आइटम्स में एक्यूरेटली आंसर करता है पर्सन। फॉर एग्जांपल राइट एंड रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, टिक मार्क जो क्वेश्चंस आमतौर पर हम एजुकेशनल सेटिंग के अंदर करते हैं, तो वहाँ पे जितने करेक्ट आंसर्स होंगे उनको हम P से डिनोट करेंगे। The proportion of the individual who answered the item incorrectly is equal to 1 minus P, और जिसका आंसर इनकरेक्ट होगा उसे 1 minus P करेंगे। एंड इज सिंबलाइज्ड एज Q, जो हमारे पास 1 माइनस Q है उसे हम 1 माइनस P है उसे हम Q से इंडिकेट करते हैं। करेक्ट आंसर्स विल बी इंडिकेटेड विद P एंड इनकरेक्ट आंसर्स विल बी इंडिकेटेड बाय 1 माइनस P इक्वल टू Q. द वेरिएंस ऑफ अ डाइकोटमस आइटम इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू प्रोपोर्शंस और PQ। हमारे पास जो वेरिएंस है वो इन आइटम्स का प्रोडक्ट होगा दोनों प्रोपोर्शन का, जिसको हम कहते हैं PQ इज इक्वल टू द वेरिएंस ऑफ द स्केल और डाइकोटमस आइटम्स। ये हमारे पास फॉर्मूला है कुडर-रिचर्डसन फॉर्मूला 21। इसको हमने किस तरह से एडमिनिस्टर करना है, किस तरह से इसकी असेसमेंट हमने करनी है। यहाँ पे K हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स है ऑन द टेस्ट, S सबस्क्रिप्ट X बार X स्क्वायर इज अ टोटल टेस्ट स्कोर वेरिएंस। हमारे पास जो पूरे टेस्ट के स्कोर्स का वेरिएंस है वो आइटम है, और मीन X बार इज इक्वल टू मीन स्कोर हमारे पास जितना भी है। अब यहाँ पे हमारे पास है कुडर-रिचर्डसन रिलायबिलिटी के अंदर, इट इज ऑफन क्लेम्ड दैट अ हाई KR20 कोएफिशिएंट फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 0.90 इंडिकेट्स अ होमोजीनियस टेस्ट। यानी कि हमारा वो जो टेस्ट है
जिसकी वैल्यू हमारे पास कूडर-रिचर्डसन फार्मूले के बाद 0.90 से ऊपर आती है, उसके अंदर होमोजेनिटी मौजूद है। होमोजेनिटी मीन सेम सेम है वो सारा स्केल हमारे पास। However, like Cronbach's alpha, homogeneity that is unidimensionality is actually an assumption, not a conclusion of reliability coefficient. अगर हम कहते हैं कि उसके अंदर होमोजेनिटी पाई जाती है तो इसे हम यूनिडायमेंशनलिटी कहते हैं, हम एज्यूम करते हैं और इसको हम कंक्लूड नहीं करते कि वो हमारे पास रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट की जो वैल्यू आ जाती है उसमें हम ये नहीं कहते कि दिस इज नॉट राइट और रॉन्ग, बल्कि हमारे पास ये एक एस्टिमेशन है। It is possible, for example, to have a high KR20 with a multi-dimensional scale, especially with a large number of items. हमारे पास ऑप्शन है KR20 की जो वैल्यू है जिसके अंदर मल्टी डायमेंशनल स्केल हो, मसलन जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी आइटम्स हों, सब स्केल्स भी हों, उस स्केल के अंदर हमारे पास इसमें आमतौर पर ज़्यादा वैल्यू आ जाती है, KR20 की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है। KR20 की वैल्यू हमारे पास 0 से लेके 1 तक रेंज करती है। तो जितनी ज़्यादा आपके पास आइटम होंगी उसकी वैल्यू 1 के उतना करीब आने के चांसेस हैं। Values can range from 0 to 1, sometimes expressed as 0 to 100, with high values indicating that the examination is likely to correlate with alternate forms. A desirable characteristic. बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे पास इसका मैक्सिमम स्कोर 0 से 1 तक भी हो सकता है, जिसे आमतौर पर हम 0.00 से लेके 1 तक हो सकता है, और इसे अगर आप पॉइंट ख़त्म करके अंडरस्टैंड करना चाहें तो ये 0 से 100 तक भी रेंज कर सकता है। With high values indicating that examination is likely to be correlated with alternate form. यानी कि इसमें हम दो अलग फॉर्म्स के साथ जो है क्योंकि कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो हाई वैल्यू का मतलब ये है कि पहला फॉर्म दूसरे के बराबर है, दूसरे के साथ लिंक कर रहा है, जैसा मेजरमेंट पहले फॉर्म से आ रही है वैसी ही दूसरे से आ रही है। It is applicable to test whose items are scored are right or wrong, or according to some other all और नन सिस्टम। इसमें इसकी एप्लीकेशन कहाँ हो सकती है, जहाँ पे हमारे पास आइटम्स राइट और रॉन्ग की फॉर्म में हो, या ऑल और नन की फॉर्म में हो, येस और नो की फॉर्म में हो, यानी कि जहाँ पे आंसर टू वे ओनली हो सकता है। ऐसी सब जगहों पे हम कुडर-रिचर्डसन रिलायबिलिटी को मेजर कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन हो सकती है। Some tests, however, may have multiple score items. कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल स्कोर्स वाली आइटम होती हैं, सच एज पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, कोएफिशिएंट अल्फा, क्रॉनबैक अल्फा इज यूज्ड देयर। जहाँ पे हमारे पास मल्टी डायमेंशनल होते हैं, मल्टीपल स्कोर्स आइटम होती हैं, वहाँ पे हम कोएफिशिएंट अल्फा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रिस्पोंडेंट मे रिसीव अ डिफरेंट न्यूमेरिकल स्कोर्स ऑन एन आइटम depend upon whether he or she checks usually, sometimes, rarely or never. अब यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आइटम्स देखें, हम किस किस तरह से हम रिस्पॉन्स ले सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल कैसे हो सकता है या मल्टीपल स्कोर्स कैसे हो सकते हैं। हमारे पास एक रिस्पोंडेंट है जिसने आंसर प्रोवाइड करना है किसी एक क्वेश्चन का, तो वो किस चीज़ पे ऊपर निशान लगा सकता है, यूजुअली, समटाइम, रेयरली और नेवर और ऑल द टाइम, इनमें से कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्री, डिसएग्री, दो कंडीशंस हैं। अगर हम इसको रेटिंग फॉर्म में लेके आना चाहिए, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये 5 हमारे पास आइटम्स बन जाएंगे, इनमें से किसी एक पे निशान पार्टिसिपेंट ने लगाना होता है रेटिंग स्केल के अंदर। तो कुडर-रिचर्डसन रिलायबिलिटी ऐसे मेजरमेंट के लिए जो है वो नहीं है, इसके लिए हम कोएफिशिएंट अल्फा यूज करते हैं। In the case when scores are not equivalent, for example, when there is not homogeneous but rather examination item of increasing difficulty, then the K20 is an indication of the lower bound of internal consistency or reliability. अगर ऐसी कंडीशन है कि हमारे पास स्कोर्स जो हैं वो इक्विवेलेंट नहीं हैं, उनमें होमोजेनिटी हमें नज़र नहीं आ रही है, तो KR20 जो है वो इंटरनल कंसिस्टेंसी के अंदर लो वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। जितनी ज़्यादा हमारे पास KR20 की वैल्यू कम आएगी, उतनी ही इंटरनल कंसिस्टेंसी डाइकोटोमस आइटम्स वाले स्केल के अंदर कम होगी। The formula of KR20 for a test with the K test items numbered I is equal to 1 to K is
कोएफिशिएंट अल्फा क्या हो सकता है? बोथ द गटमैन स्प्लिट हाफ एस्टिमेट and the Kuder-Richardson formula estimate reliability on the basis of ratios of the variances of test components, halves and items to total test score variance. क्रॉनबैक अल्फा और क्रॉनबैक 1951 के अंदर जो है क्रॉनबैक अल्फा डेवलप करने वाले ऑथर जो हैं उनका नाम क्रॉनबैक था. Developed a general formula for estimating internal consistency which he called coefficient alpha and which is often referred to as Cronbach's alpha. कोएफिशिएंट अल्फा भी वही है, क्रॉनबैक अल्फा भी वही है. अगर आपको एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आ जाता है क्रॉनबैक अल्फा का, तब भी आप इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे. अगर आपको आ जाता है कोएफिशिएंट अल्फा का, क्रॉनबैक अल्फा, दोनों एक ही चीज के दो नाम है. इट कैन thus be shown that all estimates of reliability based on the analysis of variance components can be derived from this formula and are special cases of coefficient alpha. What are the advantages? It exceeds all the problems that may be there in other forms of reliability. इसके अंदर भी वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो हर रिलायबिलिटी की दूसरी फॉर्म्स के अंदर मौजूद होती हैं, जिनके साथ हैंडल करना पड़ सकता है. चांसेस ऑफ एरर रिड्यूस्ड एज द आइटम्स आर इंटरनली मेजर्स. जब आइटम्स को इंटरनली मेजर किया जाता है तो चांसेस कम हो जाते हैं एरर के. प्रैक्टिस एंड फेमिलियरिटी इफेक्ट इज एक्सक्लूडेड. प्रैक्टिस इफेक्ट एंड फेमिलियरिटी इफेक्ट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं. एज इन स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी दिस प्रोसीजर is not affected by an individual's variation in performance from time to time. स्प्लिट हाफ में इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने टाइम टू टाइम वेरिएशन जो है आप करते हैं या गैप के साथ असेसमेंट करते हैं तो उसके वजह से कोई इफेक्ट आएगा, बल्कि स्प्लिट हाफ में हम एक ही पर्सन पार्टिसिपेंट के ऊपर या इंडिविजुअल के ऊपर एक ही दफ़ा एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ग्रुप के ऊपर, और फिर उसका हाफ कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं उसी फॉर्म को या उसी स्केल को ऑड और इवन आइटम्स के अंदर, और उसकी असेसमेंट ले लेते हैं. डिसएडवांटेज क्या है? It cannot be properly understood without reference to the classical psychometric test theory. जो क्लासिकल साइकोमेट्रिक टेस्ट थ्योरी है उसके बगैर आप इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. आपको थ्योरी का पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल की तरफ आ सकते हैं. इट इज़ डिफिकल्ट टू क्लासीफाई ऑल द आइटम्स होमोजेनियसली. आप सारी आइटम्स को क्लासीफाई नहीं कर सकते होमोजेनियस वे में. If the items are not homogeneous, this method will yield a lower reliability coefficient than does the split half method. Split half method की निस्बत ये कम हमारे पास lower reliability लेके आता है, वैल्यू कम आती है इसमें. लिमिटेशन क्या है? The Kuder-Richardson formula should not use with speed test. इसे हम speed test के साथ यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ हमारे पास yes और no items वाले स्केल के अंदर ही इस्तेमाल हो सकता है. Now let's see how you can use Kuder-Richardson formula for um, uh, estimation through SPSS and with the use of Excel data sheet. Reliability measure, we have measure of stability, measure of equivalence, measure of stability and equivalence, and measure of internal consistency. For today's discussion, we'll be talking about the method Kuder-Richardson with the statistical measure, the KR20 or the Kuder-Richardson formula 20 and KR21. The procedure, give the test once, then correlate the proportion or the percentage of the students passing and not passing a given item. So KR20 is a measure reliability for a test with binary variables. We have the answers that are right or wrong. So this could be used for identification type of test, multiple choice, or true or false type of test. Now remember that reliability refers to how consistent the result from the test or how well the test is actually measuring what you want to measure. So KR20 is used for items that have varying difficulty. On the other hand, KR21 would be used for items that have the same
difficulty. So again, KR20 is used for items that have varying difficulty. For example, some items might be very easy, others more challenging. So this should only be used if there is a correct answer for each question. So for Kuder-Richardson formula 20, we'll be using this formula. So this is k divided by k minus 1 multiplied to this bracket 1 minus the quotient of the summation of PQ over S squared, or that's the variance. So where K is the number of test items, P would be the proportion of the examinees who got the item correct, and Q would be the proportion of the examinees who got the item incorrect. S squared is what we call the variance, that's the square of the standard deviation, and the summation of PQ would be taken as well. For the interpretation, take note that 0, if we have a result of 0, there would be no correlation. Well, practically we're not talking about correlation here, but we are taking the result of the measure for Kuder-Richardson 20. So your result would range from 0 to 1. The closer to 1 would be more reliable. The closer to 0 would be unreliable. Okay, let's go to our example number 1. So a 15-item teacher-made test was administered to 12 students, and the item analysis were recorded below. This would be the table. So test the measure of internal consistency of the teacher-made test using Kuder-Richardson formula 20 or Kuder-Richardson method. So considering that this teacher-made test has varying difficulty, so there are 12 students from A to L, that's 12, and the items 1 to 15. So the first thing that we do is to get the total score for each student. By the way, the coding for recording the item analysis is binary, that's 1, 0. So 1 would mean correct response and 0 would mean incorrect response. So for example, for student A, the incorrect item would be item number 14, while the rest of the item was correct. So we get the total score for student A. Let's use the formula for sum. Gather all the cell, then press enter. So for student A, the total score the student got is 14. Okay, so we'll copy the formula for the rest of the 12 students. So as you can see, student 12 or student L got 0, student K got 1, and student D and student B got a perfect score. Okay. Next thing to do is to get the total correct response per item. So just simply add all the correct response for item number 1. So that's equals, and then sum. Then we get this, or we highlight this cells here, then press enter. So the total correct response for item number 1 would be 9. Then we copy the formula. There you go. For item 2, that would be 8 total correct response. Item 2, 3, 4, that would be 8 total correct response. So item 5 to 8, all are 7 total correct response. For item 15, the total correct response is 4. Next, now we go to the proportions.
proportions, or normally that's the percentages. So for P, that's the proportion for the correct item. So for item number 1, 9 students got the correct answer out of 12. So 9 out of 12 students got item number 1. So meaning that's 9 divided by 12. So in our formula, that would be this cell containing 9 divided by the total number of students or respondents, that's 12. So that's 0.75 or 75%. Drag the formula. There you go. So we have, for example, item number 15. This is just 33% correct response. For item, say, number 9, that's 50%. That's 6 out of 12. Okay, so we're done with P. We now proceed to Q. Q would now be the proportion for items which are incorrect. So normally we just deduct this proportion from 1. Okay, so if this is 75%, this should be 25%. To do that, this would be equals 1, that's 100%, or 1 in decimal value, minus our cell containing the 75%. That's actually D49. It's covered on my formula. Okay, but just to check, so we have here 100% minus 75%, that should be 25%. The total of these two is always 1, or 100% if we are talking about percentage. If we are talking about decimal number, it should be 1. So if we copy this formula, that would be the result. So notice the sum of this pair should always be 1. Okay. Now we get the product, that's P and Q. So we simply choose D49 multiplied to, that's asterisk, that's D50, then press enter. So again, I multiplied 0.75 and 0.25, that's multiplying P and Q. So your formula, that's D49 multiplied to D50. Okay, then you just simply drag the formula and it will perform the rest of the formula or the multiplication. Okay, I place a space here or something that you could box, so you actually need to get the summation of PQ, because in our formula summation PQ is needed. Okay, so press equals, then choose sum. Okay, if it's not here, you can always click and find more functions. Just to show you, let me just choose that method. So I'm gonna look for sum, that's SUM. There you go. Then choose OK. Then again, drag all the cells or choose all the cells included this area for the summation of the product of P and Q. Press enter and you have 3.5069. Okay, that's summation of the product of P and Q. So we now go to our solution. Okay, so just we just simply complete this table. I already prepared it so it could be organized. So in our formula, we need a K, that's the number of items. We need a summation of
PQ, or summation of the product P and Q, and we need the variance, the square of the standard deviation. So our K here would be 15. Our summation of PQ would be, let me just choose this cell, equals S51, and it will automatically copy whatever is placed here. So that's 3.5069. And then the variance, we'll be using the formula for this Microsoft Excel. Press equal sign, and then we'll look for var p. It's already here, but if you don't have it on your formula area, I'm going to choose more function, and then let's look for var p. That's variance p. There. So it calculates variance based on the entire population. We also have var s. That's for estimation of the sample, but normally I would suggest the calculates variance based on the entire population, var.p. Okay, then press OK. Now we are going to choose our array of numbers on our table. Let's just go back to our table, and we'll get the variance of the necessary data. We are now going to choose the total score, since this is the array of numbers that we are computing. We are calculating the variance based on the entire population. So press OK. So the result is 35.74306. Now I have here a shortcut. Okay, let me just show you the first method that I'll be using. So press equal sign. I'll follow this formula. So this is my first factor. This would be my second factor. Or simply, okay. So I place two parentheses. This would be my first parenthesis multiplied to my second parenthesis. Then on my first parenthesis, it's actually a quotient. So I'll place a forward slash there. Okay, as our operation for division. So my numerator, that would be the value of k, that's 15. Then my denominator, it's actually a binomial, so I'll put another parentheses, and that would be k minus 1. So k minus 1, this is k, value is 15 minus 1. I'm done with my first factor. Second factor, I have 1 minus, then this is quotient. Summation of PQ would be 3.0 or 3.5069 divided by the variance S squared, which is already here. I choose D56, then press enter. Okay, round that off to 2 decimal place. That would be 0.97. Okay, so for beginners, I'll show you another method of solution. This would be using a calculator. So first thing that we'll do is to follow the formula. We'll just have to place the value for k, summation of p, q, and the variance. So the k value is 15, and another k value here, 15. Summation of PQ would be 3.0 or 3.5069. And the variance, that would be
35.74360. Okay. So to properly visualize this operation or this formula, you'll be needing a calculator. Okay, most of you could use your calculator, your cell phone, or a pen and paper so that you could visualize it properly. Now notice I have two factors here. I'll simplify 15 divided by 15 minus 1 first. So 15 divided by 15 minus 1 is 14. Let's enter. I have 1.07 rounded off to, or I could take the 4 decimal place, 1.0714. Okay. The next factor, this is 1 minus the quotient of 3.5069 divided by 35.74306. Enter. So check, they are the same. I was able to place it properly. So the result up to 2 decimal place, 0.9018. 0.9018. Okay. And then multiply this 2, you have 1.0714 multiplied to 0.9019. That should be 19, rounded to the 4th decimal place. Okay, so your result is the same with 0.97. So we round this up to 2 decimal place, 0.97. Let me just update this to 9. Okay, so double check. Okay, that's correct. There you go. My result is correct. Now, going back to the interpretation, you should be able to interpret the result. So the KR value is 0.97. Okay, it denotes a very high relationship. Hence, the teacher-made test has a very high reliability. So there you go. This is a reliability test using the Kuder-Richardson Formula 20 for measure of internal consistency. Thank you for watching. Hope you have learned a detailed description of Kuder-Richardson formula, how you can calculate it through SPSS and Excel datasheet. Here are the references from where the theoretical data is taken. Still, if you have any kind of questions, queries, and feedback about today's lecture, you may contact on the given email address. Thank you for your attention. Thank you very much.